अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेमिंगो टेक। तो इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि पावर पॉइंट का इंटरफेस क्या है, इसका रिबन किस तरह काम करता है, इसके डिस्प्लेइंग आइकन्स को हमने डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस को किस तरह क्रिएट और किस तरह ओपन कर सकते हैं। सो फॉर दिस वी हैव टू गो टू फाइल टैब हियर and in the backstage view, and yes, if you want to start your presentation from scratch then you have to go to blank presentation option. Okay, और अगर आपको इसके बिल्ट इन थीम्स को ही कस्टमाइज करना है तो आप किसी भी थीम को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपना डाटा कस्टमाइज कर सकते हैं like this. You just have to download it by choosing the create option. Okay, like this. You can add your shapes, you can style your slides according to your requirements. And one more option, if you want that PowerPoint shortlist the themes for you according to your specifications, then you can also type your template here. Like if you want templates relevant to charts, okay, then you can type chart here. And if you want themes like diagrams, okay, so in this way you can just type your specifications here, that what theme you need the most in your presentations, then PowerPoint will shortlist the themes or templates for you. Okay, so in this way you learn that how to create your PowerPoint presentation. जी, तो अभी हमने फाइल्स को क्रिएट करना देखा था और अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस को ओपन किस तरह कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी अपने सिस्टम में कोई सेव्ड फाइल है या फिर कोई प्रेजेंटेशन है जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं और अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो अगेन यू हैव टू गो टू फाइल टैब and then in backstage view choose open from the left pane. Okay, so in open, by choosing the open option, then you have few different options like recent, OneDrive, this PC, add a place, browse. तो recent में हमारे पास राइट पेन में दो ऑप्शंस हैं, प्रेजेंटेशंस और फोल्डर्स। प्रेजेंटेशंस में वो वाली फाइल है, वो रिसेंट फाइल आ जाती हैं कि जिन पे हमने वर्किंग किया है, और फोल्डर्स में वो रिसेंट फोल्डर्स आते हैं कि जिनमें हमने अपनी फाइल्स स्टोर की हैं। ओके, तो इसके अलावा yes, another important thing that if you want that this file is very important to you और आप इस फाइल को frequently ओपन करते रहते हैं तो आप उसके लिए उस फाइल को पिन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंट में आ जाएगी कि इसे ये कुछ मैटर नहीं करेगा कि आपने वो फाइल कितनी देर पहले की बनाई हुई है और इसके बाद भी आपने कितनी फाइल्स को क्रिएट किया है, बट ये फाइल हमेशा आपके सामने आएगी क्योंकि आपने इसको पिन किया हुआ है और ये इजी होता है कि आपको फाइल्स बार बार ढूंढनी नहीं पड़ती जिस पे कि आप फ्रीक्वेंटली वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा वन ड्राइव आपकी क्लाउड स्टोरेज होती है कि जिसमें आप अगर आपके पीसी में या सिस्टम में इतनी स्पेस नहीं है तो आप अपनी फाइल्स को वन ड्राइव पे सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से इसमें साइन इन करना पड़ेगा, अदरवाइज योर फाइल्स विल बी सेव्ड ऑन योर पीसी। सो अदर लोकेशंस आर दिस पीसी। ओके, सो जब हम दिस पीसी के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास फ्यू फोल्डर्स आ जाते हैं कि जिससे हम लोग अपनी फाइल्स को ब्राउज कर सकते हैं कि वो कहाँ पर स्टोर्ड हैं। और द मोस्ट क्विकेस्ट वे इज़ टू फाइंड योर फाइल इज़ बाय यूजिंग द ऑप्शन ब्राउज से हम लोग डायरेक्टली किसी भी लोकेशन में जा सकते हैं कि हमारी फाइल्स कहाँ पर स्टोर हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई स्टोर अ फाइल इन डॉक्यूमेंट्स and by clicking the open button your file will be opened.
Okay, so now you learn that how to create and open your PowerPoint presentations. If you like this video and if you find this video informative, then like, share and comment, and also subscribe to my YouTube channel Flamingo Tech. Stay tuned for more videos. Thanks for your watching time.